of CPU scheduling more accurately. Now moving on to the various scheduling algorithms. So this is very important topic. So we have various different types of algorithms by which the CPU scheduler choose any one process from the ready state and assign the CPU to that particular process. So we have first come first serve scheduling algo, then we have shortest job first, then there is another variation of this SJF which is also known as SRTF, shortest remaining time first. Then on the basis of priority of the processes, we have priority scheduling. This round robin is very interesting, which is totally based on the time sharing system or the multitasking system, where we will be having a time quantum. Suppose 2 seconds, so एक process एक बार में CPU के पास सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही जा सकता है. So इससे response time बहुत कम हो जाएगा. Each and every process will be executed so fastly that it will appear that they all are executing concurrently. Then in the last, we have multi-level queue scheduling and multi-level feedback queue scheduling. So we will see all these algorithms one by one in the next lecture. So today I am just going to discuss the very first case, the first come first serve scheduling algorithm, which is the simplest scheduling algorithm. So first come first serve CPU scheduling algorithm is one of the scheduling algorithms which is most commonly used, and the most important thing you have to remember is it is always non-preemptive. So abhi humne discuss kiya CPU scheduling. The scheduling can be preemptive or it can be non-preemptive. Non-preemptive means there isn't any force on the process. एक बार कोई process CPU के पास चला गया, वो complete होकर ही CPU से बाहर जाएगा, process RAM से बाहर जाएगा, बीच में वो कभी भी वापस रेडी स्टेट में नहीं जाएगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव. एंड FCFS, which is first come first serve, is always non preemptive in nature. Once a process is assigned to a CPU, it will complete its execution and then only it is going to be terminated. So the process, the overall scenario of this FCFS is, as the name suggests, first come first serve. Pehle aao pehle pao. So the process that requests the CPU first is allocated the CPU first. So जो process सबसे पहले CPU की demand करेगा उसे CPU allocate हो जाएगा और कोई भी इसमें concept लगाने की जरूरत नहीं है. And basically this particular algorithm can be easily implemented using the concept of the simple linear queue, which is also known as the first in first out. And whenever a process enters the ready queue or the ready state or the RAM, its process control block is linked onto the tail of the queue. So with data structure आप सब लोगों ने पढ़ा है, you must be knowing the concept how a linear queue works. We used to have a front, we used to have a rear. तो कोई भी नया आइटम या डेटा आता है तो वो रियर पे ऐड होता जाता है. सो इट इज जस्ट लाइक क्यू वी यूज्ड टू सी एट द रेलवे टिकट काउंटर और एट एनी specific organization. If you are going to submit your fee also, you used to make a queue. और जो सबसे आगे है वो सबसे पहले काम करेगा, जो नया पर्सन आएगा वो हमेशा सबसे लास्ट में आके ऐड होता जाएगा. So this is the concept behind the implementation of this FCFS scheduling algorithm. And whenever the CPU is free, it is allocated to the process at the head of the queue, and the running process is removed from the queue because now the state will change from ready to running for that particular process. And if I talk about the advantage of FCFS, it is very simple and very easy to understand algo. But if we talk about the drawback is the average waiting time under first come first serve policy is very long. So in the numericals which we are going to do, the overall we have to focus on this last concept, that is of average waiting time. So overall जितने भी processes RAM में थे उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा processes को कम से कम वेट करना पड़े, that should be our practice. But FCFS easy तो है understand करने के लिए, implement करने के लिए, but in many cases the average waiting time is very long, so that's why it is not much preferred as compared to other algorithms which we will study later on. So moving further, so this is the kind of numericals which you will be having in your exam or
how we have to implement this first come first serve. So first of all, we must understand the scenario, how we have to do this, or what will be given to us in the question. So this table shows there are three different processes, P1, P2 and P3 currently in the RAM, and they have their own CPU burst time. So मैंने अभी discuss किया arrival time, CPU burst time, then turnaround time, then we have waiting time, and then we have response time. So this is the first example, and this will set your base for all the numericals or all the concepts. So आपको कुछ इस तरह का एक टेबल गिवन होगा जहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ बर्स्ट टाइम गिवन होंगे. अभी हम सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं, FCFS की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं मेंशन है, लेकिन जैसे ही प्रीएम्प्शन आ जाएगी तो हमें अराइवल टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम देखो क्या एज्यूम कर रहे हैं, देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, P1, P2 एंड P3. हर एक प्रोसेस का अपना बर्स्ट टाइम है. CPU बर्स्ट टाइम मींस उस प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए CPU पर एग्जीक्यूट होने के लिए, अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए. सो P1 एक प्रोसेस है जिसको 24 मिली सेकेंड्स चाहिए. ये टाइम हमेशा आपका मिली सेकेंड्स में होगा, बिकॉज this is how quickly the processes get executed on the CPU. So P1 requires 24 milliseconds, whereas P2 and P3 requires 3 milliseconds for the execution of their task. But by chance सबसे पहले RAM के अंदर P1 आया, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या बोलती है, जो सबसे पहले आ गया उसको CPU दे दो, उसके बाद जो आ गया P2 उसके बाद उसको दे दो, फिर लास्ट में P3 आया तो सबसे लास्ट में CPU किसको दे दो, P3 को दे दो. Now I have, as mentioned, FCFS scheduling is always non-preemptive. तो एक बार किसी प्रोसेस को CPU मिल जाएगा तो वो अपनी सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा, जितना टाइम उसको चाहिए वो कंप्लीटली पूरा टाइम लेगा, बीच में कभी भी वापस रेडी में नहीं जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि ये 24 में से पहले 12 मिलीसेकंड तक वो एग्जीक्यूट होगा और रेस्ट 12 मिलीसेकंड उसको बाद में मिलेंगे. वो कब होगा, जब प्रीएम्प्टिव होगी, उसकी हम अलग से बात करेंगे. FCFS कभी भी प्रीएम्प्टिव नहीं होती. FCFS इज ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव. किसी भी प्रोसेस को एक बार CPU मिल गया तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, जितना टाइम उसको CPU के पास चाहिए वो कंप्लीटली उसे मिल जाएगा. सो दिस इज द पिक्चर कि आपको पेपर में सिर्फ इतना गिवन होता है, प्रोसेस इन द बर्स्ट टाइम, एंड आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, एंड यू हैव टू मेक दिस गैंट चार्ट depending upon what values are given to you. So here you can see we have 3 processes, P1, P2, P3, and now we are supposing that the processes arrive in the ready queue in the RAM in this order. तो सबसे पहले P1 आया था, then P2 आया था, then P3 आया था, एंड अभी हमने यहाँ पे सीखा कि इजिली हम रेडी स्टेट में या रेडी क्यू में इसको फीफो की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं. हम एक क्यू बना सकते हैं जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अगर P1 सबसे पहले आया था तो वो फ्रंट पे होगा, देन P2 इसके पीछे खड़ा होगा, देन P3 इसके पीछे खड़ा होगा. सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कहीं भी हमें माइंड नहीं यूज करना, जो पहले आता जा रहा है उसको हमें CPU देना है, उसको जितना टाइम चाहिए CPU पे वो ले सकता है, हम उसमें से बीच में से उसको CPU भी छुड़वाएंगे नहीं. सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट. नाउ दिस गैंट चार्ट वी हैव टू मेक आवरसेल्फ. तो यहाँ पे आपको बना बनाया मिला है, इससे एक नेक्स्ट केस में आपको बोर्ड पे बना के भी दिखाऊंगा. सो क्या करना है, देखो सबसे पहले हम हमेशा एज्यूम करते हैं दैट टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ऑलवेज. सो जो P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ वो 0 से स्टार्ट हुआ, एंड कितना बर्स्ट टाइम है इसका P1 प्रोसेस का 24. सो 0 से लेके 24 मिलीसेकंड्स तक कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस P1. वाई, सबसे पहले रैम में आया था, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो सबसे पहले आया है उसे सबसे पहले CPU दे दो. तो P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा. वाई, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव, बीच में कभी भी इससे हम CPU को नहीं खाली कराएंगे. सो P1 को एक बार CPU मिल गया 0 मिलीसेकंड पे, जैसे ही ये आया ये कंप्लीट 24 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हो जाएगा. 24 मिलीसेकंड्स होते ही P1 ने अपना टास्क कंप्लीट करा. क्यू में नेक्स्ट टर्न प्रोसेस P2 की है, प्रोसेस P2 आया. प्रोसेस P2 को कितना टाइम चाहिए, 3 CPU burst time is required for the process P2. So for 25, 26 and 27, up to 27 milliseconds, process P2 is executed.
and it will simply leave the RAM, leave the system, and now we have only one process left in our ready queue, in our FIFO queue, that is P3, and now P3 also requires only 3 milliseconds. So from 27, 28, 29 and up to 30 milliseconds, the process P3 will complete its task. Now there are some important terms which we have to discuss here. First thing, जब आप ये गैंट चार्ट बनाते हो तो जो आपका यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है डिजिट 30 और जो इनका सम होगा आपके बर्स्ट टाइम का वो हमेशा सेम होना चाहिए. अगर सेम नहीं आ रहा दैट मींस यू हैव मेड सम मिस्टेक. तो अभी आपको ये सिंपल लग रहा है, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को या फिर उसके प्रीएम्प्टिव वर्जन को. प्रायोरिटी के साथ प्रीएम्प्टिव को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग केयरफुली एंड आई विल गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स, सो मेनी टास्क्स टू डू, that by doing practice you will not make any mistake in the future. So this was the first example that how you have to make the Gantt chart. Now what we have to calculate, average waiting time always. So average waiting time कैसे निकलेगा? P1 ने टोटल कितना वेट किया, P2 प्रोसेस ने टोटल कितना वेट किया, P3 प्रोसेस ने टोटल कितना वेट किया, उनका वेटिंग टाइम निकाल के ऐड करके जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं अगर मैं उससे डिवाइड कर देता हूं, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द एवरेज वेटिंग टाइम. And in all these numericals, our major focus is to find the average waiting time only. So, अगर मैं बात करूं प्रोसेस P1 की, तो भाई प्रोसेस P1 सबसे पहले आया था. जैसे ही वो रैम में आया और कोई प्रोसेस नहीं था, साथ के साथ उसको CPU मिल गया. तो अगर आपको प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम देखना है, तो जो उसका लेफ्ट साइड वाला डिजिट है, दैट इज द वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 को आते ही रैम में पहुंचते ही CPU मिल गया, उसे 1 मिलीसेकंड भी वेट नहीं करना पड़ा. सो द वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस P1 इज 0. देन इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस P2 की बारी का बारी 24 मिलीसेकंड्स के बाद, क्योंकि पहले P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो P2 को कितना वेट करना पड़ा भाई? 24 मिलीसेकंड्स वेट करना पड़ा, बिकॉज वो P1 के बाद आया था और P1 24 मिलीसेकंड्स तक अपना टास्क कंप्लीट करता रहा. सो P2 का जो वेटिंग टाइम है वो 24 सेकंड्स हो गया. सिमिलरली P3 की टर्न कब आई? P3 की टर्न आने से सबसे लास्ट में, तो पहले P1 चला 24 मिलीसेकंड्स के लिए, देन P2 चला 3 मिलीसेकंड्स के लिए, तो टोटल 27 मिलीसेकंड्स हो गए. जैसे ही 27 मिलीसेकंड्स हुए P3 की टर्न आई, तो P3 को वेट कितना करना पड़ा? दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस P3. सो P3 हैज टू वेट 27 मिलीसेकंड्स जब उसको CPU एलोकेट होगा. सो द वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 is 0 milliseconds, waiting time for process P2 is 24 milliseconds, and waiting time for process P3 is 27 milliseconds. Now average waiting time 0 plus 24 plus 27 is 51, and 51 by total number of processes we are having 3, so 51 divided by 3 will be 17. So this is the numerical which we have to solve. Now I'm just giving you one simple task. The same numerical is there, but the order of arrival of the processes. देखो यहाँ पे P1 का burst time 24 है, P2 का 3 है, P3 का 3 है. That will remain same. Just मैंने एक order change किया. अब आपको क्या assume करना है? देखो सबसे पहले P2 आया, फिर P3 आया, फिर P1 आया. So just spend 2 or 3 minutes to tell me the average waiting time. Now the order of the processes is P2, P3, P1. सबसे पहले P2 आया जिसका CPU burst time 3 था, then P3 आया जिसका CPU burst time 3 था, लास्ट में P1 आया जिसका CPU burst time 24 है. Now how you are going to make the Gantt chart, and if anyone can tell me the waiting time for all the processes and average waiting time, just let me know. Now the order is P2, P3 and P1. Okay, so I'm sharing the board also with you people so that you can see. This is the question which I have written for you, and I have to make a Gantt chart starting from 0 always. But now instead of the P1, P2 and P3 order, we have this order. P2 arrives first, P3 arrives after P2, then P1 arrives after P3, but their burst time is same. Okay, so someone has answered, so let me
see the chat box. Okay, Akanksha has said that 12 is the average waiting time. Okay, anyone else or any other answer? This is the modified example for FCFS where instead of P1, P2, P3, we have P2, P3, P1. Burst time is same. We have to make a Gantt chart and we have to find out the waiting time individually and then average waiting time. So just take 5 minutes, all of you, and just try to find out what can be the average waiting time in this particular case. 0 से start होगा. Okay, so Himanshu has answered. The waiting time for P2 will be 0. For P3 it will be 6. And for P1 it will be 30 and average waiting time is 12. Okay, any other answer from anyone? Average waiting time is 12. 12, Devesh has minimized the time from 12 to 10. Okay, anyone or two more answers, then I will just solve it for you people here and we will see how we have to make the Gantt chart. Because जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे direct slides देखकर हम नहीं समझ सकते how the Gantt chart is actually prepared. Okay, Prakhar has minimized it to 4.5 milliseconds. 3, Ayush has answered 3, Ganesh has 10. Okay, so many different answers. Some are saying 12, some are saying 10, some are saying 4.5, some are saying 3. Okay, so just let me solve it for you and then you can match your answers and some of you are definitely correct and you will get to know the answer. So now instead of process P1, P2, P3, the process arrives in the ready queue in the RAM in this particular order. सबसे पहले P2 आया जिसका burst time 3 है, then P3 आया जिसका burst time 3 है. In the last, now the process P1 enters the system and the burst time of process P1 is 24. तो सबसे पहले P2 आया, so P2 को allocate होगा CPU. Starting time will always remain 0 milliseconds. And P2 को कितनी देर तक execute होना है 3 milliseconds तक. So P3 will be executed from 0 to 3 milliseconds. After that process P2 completed. Then next is P3. P3 also requires the 3 milliseconds. So that means 4, 5, 6. Up to 6 milliseconds this process P3 is going to be executed. And in the last the process P1 arrives, which requires the CPU burst time of 24 milliseconds. So I'm just making it a little long to make it different from these two, which are taking 3 milliseconds. Now this is process P1, which requires 24 milliseconds. So starting from 6, we have 30 milliseconds. So from 6 milliseconds or 7 milliseconds to 30 milliseconds, this process P1 will be executed. So this is how the Gantt chart will be made if this is the scenario. Now talking about the very first thing, जितना भी यहाँ पे आपका last digit आएगा 30, वो आपके इनके सम के बराबर होना चाहिए. Otherwise there is some mistake in your Gantt chart. This is the first thing you have to remember. So 3 plus 3 is 6, 6 plus 24 is 30, and here also we are getting 30. That means Gantt chart is very much correct according to the given scenario. Now waiting time of process P1. P1 की बात करें तो P1 process को कितना वेट करना पड़ा यहाँ पे? सबसे पहले P2 चला, then P3 चला. तो P1 को कितना वेट करना पड़ा? तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि P1 का अगर हमें वेटिंग टाइम देखना है, you just go to the block of P1 and just pick the digit which is on the left hand side. So P1 की जो टर्न आएगी वो 6 milliseconds के बाद आएगी, because पहले हमारा P2 चला जिसने 3 milliseconds लिए, then हमारा P3 चला जिसने फिर से 3 milliseconds लिए. तो 6 milliseconds तक P1 प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा अपनी बारी आने के लिए. This is the first thing. Now if I talk about the waiting time for process P2, तो भाई P2 को कितना वेट करना पड़ा इस केस में? सबसे पहले आया था P2, so P2 is the first one to arrive. P2 को आते ही CPU मिल गया था, तो P2 को हमें वेट नहीं करना पड़ेगा. जैसे ही RAM में आया साथ के साथ CPU allocate हो गया. Or you can also check the block of P2, the left hand side digit is 0, so the waiting time for the process now is 0.
लास्ट वाले एग्जांपल में P1 सबसे पहले आया था तो उसका वेटिंग टाइम 0 था. Here process P2 arrives first, so we do not have to wait. And if I talk about the waiting time of process P3, so how much P3 have to wait to get CPU? If anyone can tell. 3, yes. सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट हुआ 3 मिलीसेकंड्स तक, तब तक P3 को वेट करना पड़ा. तो जैसे 3 मिलीसेकंड्स कंप्लीट हुए, P3 will get the CPU. So the waiting time for this process P3 is 3. Now average waiting time is simply the waiting time of P1 plus P2 plus P3, and total number of processes are 3. So it will be 9 divided by 3. Now this is the correct answer. The total average waiting time, if we just simply change the order of arrival of these 3 processes, reduces from 17 milliseconds to only 3 milliseconds. So on an average एक process को 3 मिलीसेकंड ही वेट करना पड़ रहा है, उसके बाद उसे CPU मिल जाता है. जबकि जो हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया P1, P2, P3 अगर ऑर्डर होगा तो क्यों होगा 17 मिलीसेकंड्स का एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है. तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम इतना बड़ा है 24 मिलीसेकंड्स का है कि उसकी वजह से बाकी जो 2 प्रोसेसेस थे जिनका बर्स्ट टाइम इतना छोटा है, जस्ट 3 मिलीसेकंड्स दे रिक्वायर, but they just have to wait for 24 milliseconds, then P3 has to wait 27 milliseconds. So this is the overall concept. And I have discussed also that in the case of FCFS, in general, in most of the cases, the average waiting time is very large, as we have seen in the previous example. So I hope this thing is clear to you. So just confirm me in the chat box if this example, how to solve, is clear to all of you. Yes, sir. Okay, thank you. So just let me discuss the last point for today's lecture regarding this FCFS. Okay, so I hope the screen is visible, and we were just doing this example where P1 comes first, then P2, then P3. Most important thing is how to make the Gantt chart, and on the basis of this Gantt chart, how to find out the waiting time for the individual process. Now I am just showing you the example which I just gave you to solve. So this is how we have to solve. So now it says, suppose that the processes arise in the order P2, P3 and P1. And here you can see if P2 comes first, then it requires only 3 milliseconds. Then if P3 comes after P2, it also requires 3 milliseconds. So 3 से 6 तक P3 एग्जीक्यूट होगा. सबसे लास्ट में P1 की टर्न आई, so 6 to 30 तक P1 एग्जीक्यूट होगा. Now P1 has to wait 6 milliseconds, P2 has to wait 0 milliseconds, and P3 has to wait 3 milliseconds. So 6 plus 0 plus 3, so 9 divided by 3 will be 3, and this is the result, which is much better than the previous case. So now the last point, important point, is convoy effect, which I have to mention here. सिर्फ एक ऑर्डर हमने चेंज किया, P1 को फर्स्ट प्रोसेस की जगह हमने लास्ट प्रोसेस बना दिया, and you can see the huge difference in the output. Instead of average waiting time 17 millisecond, the result is now only 3 millisecond, the average waiting time. So this is just because of the effect which is known as convoy effect, which is mentioned there in this slide in the last point. So now what is convoy effect? So convoy effect is simply means the processes which are having the short CPU burst time, if they are behind the long CPU burst time processes, then definitely it is going to affect each and everything of the system. So convoy effect क्या होता है? अगर कोई भी process जिसका CPU burst time बड़ा है वो पहले execute होना start हो जाए, तो क्या होगा, जो छोटे वाले प्रोसेसेस हैं उनको बहुत देर तक वेट करनी पड़ेगी. तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे P1 की टर्न पहले आ गई तो P2 को 24 मिलीसेकंड्स तक वेट करना पड़ा और P3 को 27 मिलीसेकंड्स तक वेट करना पड़ा. लेकिन अगर हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया, जिन 2 प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम कम था, 3 मिलीसेकंड था, अगर हमने उनको पहले एग्जीक्यूट कराया, और जिस प्रोसेस का CPU बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा था 24 मिलीसेकंड था, अगर हम उसको सबसे बाद में ले गए, तो ओवरऑल सिस्टम पे कितना इफेक्ट हुआ, एवरेज वेटिंग टाइम कितना रिड्यूस हो गया, 17 से 3 आ गया. सो दिस इज द कन्वॉय इफेक्ट. In many cases it happens.
जिस प्रोसेस का CPU बर्स्ट टाइम बड़ा है, अगर वो पहले एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए तो बाकी प्रोसेसेस जिनका बर्स्ट टाइम बहुत छोटा है उनको बहुत देर तक वेट करनी पड़ती है. दिस पर्टिकुलर इफेक्ट is known as the convoy effect. So I am stopping here for today. In this lecture we have discussed in detail the various scheduling criteria, the various scheduling algorithms, and out of those algorithms I have just discussed the very first and the simplest algorithm, that is first come first serve, which can be implemented using FIFO-Q. And majorly we have to learn how to make this Gantt chart, and there are some more perspectives, some more interesting concept I am going to discuss in the next lecture, where we will study shortest job first, which is again non-preemptive. But there is again one preemptive version of SJF, which is known as SRTF, shortest remaining time first. So that is really one of the most interesting concept of these scheduling algorithm. So we will learn that in the next lecture. But for today, you must know how to make this Gantt chart and how to calculate the waiting time for individual processes. And from that waiting time, we have to find out the average waiting time. So this is how the numerical you will going to have in your exams also. So this is all for today. Okay.